Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. So that I know you all are with me live in this session. So we'll just wait for a couple of minutes until few people join in, and then we should be good to go with today's mid-market session. Murthy ji, good afternoon. Nikhil ji saying thank you very, very much for adding strategy orders. So long I was waiting for it. Happy to see it's now available. Glad, Nikhil ji. I think we'll also, I think in one of what we can also do is I'll, connect my mobile to my laptop. And I will, also try showing you how do you actually place strategy orders. I know for a fact that, you know about, placing strategy orders, but there are a lot of people who wouldn't know about it. So we can have one session on how to do strategy orders as well. So I think that will be nice. Hardy ji, good afternoon. Vinay ji, good afternoon to you as well. Purit ji, sound and video is clear. Okay, perfect. So we'll just wait for another 20 seconds or so और शुरू करते हैं आज का मिड मार्केट सेशन. सो another day of down move in Nifty. I think Nifty is at 24,591. We are down around 0.5%. Rohan ji, good afternoon. Okay. So let us start off with the mid market session today. So starting off with an update on the global markets. तो कल यूएस मार्केट्स की बात करें सो डाउ जोन्स वाज अप 0.3%, S&P 500 वाज अप 0.24%, Nasdaq was also up around 0.21%. So all the US markets closed in the positive territory yesterday. If we look at the Dow futures, so Dow futures is up around 0.27%, so we can expect a slightly positive start to the US markets today. If we look at the Europe market, so barring France, the other two major European markets were in red. So DAX was down around 0.44%. London was down 0.11%. While France was the best performing global index best performing European index that was up around 0.47%. If you look at the Euro Stocks index, that was up around 0.32%. If we look at the Asian markets, if we look at Nikkei, Nikkei is up 0.73%. Hang Seng is down 0.76%. Shanghai is up 0.92%. So Shanghai has been the best performing global index, at least for the month of August. So today we have the monthly expiry. We'll have the rollover data coming in today. So if we look at the best performing global index, that has been Shanghai, which is up nearly about 7.3%. Kospi is up 0.29%, whereas if we look at Nifty and Sensex, so we are seeing some sell-off in our markets in the last couple of trading sessions. So Nifty is down 0.48%, Sensex is down 0.47% here. So today being the last day of the August series, so Shanghai being the best performing global index, whereas Nifty has been the second worst performing global index, so we are down 0.19%. And Kospi is down nearly 1.5% for the month of August year. That is, this data is until today. So we'll have to wait until the closing to see where Nifty stands. But Nifty again, for the third straight month now, I think June, July, August, both last 3 months has not been that great for Nifty. June, we had that period of consolidation. July, again, we were like up and down. We closed negative. And August, again, one more month where, Nifty is under pressure. If you look at the macro indicators, again, the dollar index has been flat now. It is trading in that 99 to 97 mark. So nothing much to worry on the dollar index. So I think the resistance for dollar index is at 100. So as long as the dollar index moves down, it is a slightly positive sign for us. One important development is again the yields is starting to see
going downwards. So we can see yields at 0.63%. Today again it's down 0.45% here. So yields have the US 10-year government bonds yields have dropped to 4.2%. One of the reasons why the US markets are doing well at the current juncture. So chances are that the Fed might go for a rate cut in the September policy meet. So if you look at India VIX, so in the morning trade, India VIX was quite volatile. So we were up at around 7-8% in the morning session, but we could see gradually some VIX cooling off. ये जो lower level से हमें थोड़ा सा एक bounce back मिला था, but again we are seeing some kind of pressure coming in our markets. So VIX is down. It's mildly up now. It's 0.94%, but there was some pressure in the morning. So I think 13.5 will be the key level to watch out in India VIX. So if India VIX goes above 13.5, chances are that we can see some volatile moves coming in. If we look at dollar by rupee, again, no signs of dollar depreciating. So dollar is at 87.65. So as long as, like we've been discussing, as long as this doesn't go down, our markets are expected to remain under pressure. If you look at Brent crude, so Brent crude again, it took resistance around this $68.5 a barrel mark. So I think on the downside, the $65 a barrel is likely to act as a good support. Whereas on the upside, $70 a barrel is likely to act as a strong resistance. If we look at the commodities here, so if you look at silver has been the best performing commodity. Or if you look at silver is at $38 an ounce. So silver, high chances are that it can move towards $42 an ounce in the short term. So we can see some likely outperformance in silver from a short to medium term basis. Whereas if you look at gold, gold again, there has been some uptick in gold as well. So gold is close to its upper resistance. It's at $3,400 an ounce. So again, if we get a breakout about $3,420 an ounce, chances are that even gold can start outperforming. But between gold and silver, I feel silver can outperform probably in the short to midterm period, at least for the next 3 to 6 months. I think the outlook for silver looks quite promising. If you look at the FII positioning in our market, so FII is, I think on Tuesday they sold off heavily in the cash market. So they sold off close to around 6,516 crores. I think massive selling. I think we never saw this kind of selling, especially in the month of August. And from the 1st August onwards, I think the quantum of selling was the highest on Tuesday. So around 6,500 crores offloaded by the FIIs. I think chances are that looks like looking at today's Nifty's action, they might be offloading some more shares as well. But if we look at the net index futures, so despite the net index futures contract going up, that is from minus 1,70,000 to minus 1,76,000, there has been a slight improvement in the long short ratio. The long short from 13.42 has gone to 14.3. So there is some kind of divergence that we are seeing in the fact that, so the shorts that have been built up by the FIs and index futures, I think more longs have been bought here. So from the last 2 days. But nevertheless, this long short ratio, despite, gradually moving up from almost 7.95%, which was the lowest that was on the 12th of August. It has now moved to 14, but despite moving to 14, still FIIs continue to hold more short than the long positions. So today's data will be very, very important. So we have seen on the expiry day, especially on the monthly expiry day, the long short ratio, we see massive shift taking place in the long short ratio. But again, today's data will be very important. We'll have the rollover data as well. So we'll come to know whether people are actually carry forwarding Nifty's position to the next month, or they are unwinding their positions year itself. So I think today's data will be very important. But again, like I said, unless and until there is no clarity on the US-India trade talks, right now we've been hit with 50% tariffs on select Indian goods. So unless and until we don't have a clarity on that, and again, unless and until we don't see dollar depreciating against the rupee,
there is no chance for the FIIs to come back. I think for the FIIs to come back, at least these, the geopolitical issues, the macroeconomic issues that are going around, I think these should stabilize first. And secondly, the dollar should start depreciating. Only when that happens, FIIs might come back to our markets, and we might see the momentum that we've been missing out since last 3.5 months for now. If we look at Nifty today, so Nifty again, it broke its key level of 24,700. We went down. Luckily, we were not able to go below 24,500. So 24,500, around near about 24,500, we saw some buying coming in Nifty. If you look at days low, it is at around 24,507. So we could see some pullback until 24,676 again. Nifty is yet to go past the day's high, which is around 24,702, which is the high for Nifty today. And again, near about 24,675, 24,676, we could see Nifty going down again. So I feel looking at the range for Nifty for the next couple of hours, I think two key levels is something that we need to track. One would be 24,500 for Nifty on the downside, and on the upside it would be 24,700. So if we look at 24,700 at the current juncture, in fact, call writers have been aggressively building positions at 24,700, whereas the put writers have been moving away from 24,700, which clearly shows, looking at the option data, it seems very difficult for Nifty to close above the day's high, which is at 24,700. So high chances are that Nifty might not be able to go past the 24,700 mark today. While on the downside, I feel a major support level would be at 24,500. As it stands at 24,500, we have strong amount of put writing as compared to call writing. So we have around 290 lakhs of put writing compared to 53 lakhs of call writing. And even on an intraday basis, there has been a good amount of put writing here, almost 206 lakhs of put writing compared to just 41 lakhs of call writing here. So I feel Nifty might be able to hold on to 24,500 today, unless the data changes dramatically in the last 1.5 hours. I think we have seen especially on the monthly expiry day, 1:45 2 baje ke aspas, the data goes through a lot of changes. But looking at the price movement today, looking at the OI data, very difficult for Nifty to cross 24,700 on the upside, and looks unlikely that Nifty might go below 24,500, unless if put writers exit from 24,500, the chances are that we might see more pressure coming in Nifty. But as it stands, 24,500 strong support for Nifty, while 24,700 is likely to act as a strong resistance for Nifty, or Nifty is likely to stay within the range. That is what I feel, looking at the price action and looking at the option data. If I look at Sensex again, so pretty much similar story in Sensex. So we went below. If you look at today's high, it was around 87.75. So 8,800, strong resistance for Sensex. Despite the pullback that we saw from the lows, so the lows was around 80,100 here. So I feel the two key levels to watch out in Sensex would be the level of 80,000 on the downside and the level of 8,800 on the upside. So if we look at the option chain, अगर हम Sensex की बात करें, if I look at the OI change first, so 80,000 there is good amount of put writing. तो जैसे हमने 24,500 देखा था निफ्टी में, वैसे ही 80,000 पे काफी strong put writing है, which is indicating a strong support for Sensex. Whereas if I look at 8,800, I could see that put writers are exiting, similar to the trend that we saw in 24,700 in Nifty, where the put writers were exiting and call writers were strengthening their position. So दोनों indices की बात करें, Nifty और Sensex, resistance काफी strong बनते हुए नजर आ रहा है. अभी भी सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, बट वो सपोर्ट हो सकता है कि वो लास्ट 1.5 आवर्स में वो टूट भी सकता है. अभी के लिए 8,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सेंसेक्स के लिए, और डाउन साइड में 80,000 इज लाइकली टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. एंड इवन इफ यू लुक एट द टोटल ओआई, at 80,000 we have strong put writing as compared to the call writing, whereas in 8,800 there is more call writing than the put writing here. So similarly, if you look at the chart, आई थिंक 80,000 होल्ड कर सकता है सेंसेक्स, बट अगर हम 80,000 के नीचे जाते हैं तो और प्रेशर आ सकता है सेंसेक्स में. ऑन दी अपसाइड,
काफी कम चांस लग रहा है कि शायद सेंसेक्स डे हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, दैट इज योर 8800 लेवल. Looks very unlikely at this point of time. If we look at Bank Nifty, so Bank Nifty का भी pretty much similar story है. So Bank Nifty also experienced a breakdown. So Bank Nifty we've been seeing there is no support from the private banking space. So barring अगर हम आज heat map भी देखें, so if you look at ICICI Bank, that is down 0.65%, HDFC is down 0.3%. So it's been quite some time that private banks have been underperforming. एक बाउट्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस दिखाई दिया था PSU नेम्स में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, आपका कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बट अगेन दैट मोमेंटम हैज आल्सो काइंड ऑफ कूल्ड ऑफ इन द PSU स्पेस एज वेल. इन्फी में एक बॉटम बनते हुए नजर आया था, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक नजर आई थी हमें 2 दिन में, एंड because overall एक broader market weakness है, because of which even the IT stocks are down. I think one of the reasons why Nifty is down today is because of the drag in the IT stocks. Infy, HCL Tech almost down from 1.5 to 2%. TCS is down 1%. Again, no support from Reliance as well. Reliance is also down near about 0.25% today. So the major 3 key heavyweights sector wise देखा जाए, IT, oil and gas, banking, all these 3 sectors are down. In the morning trade, there was some support from the FMCG space, but again, there is some profit booking that we are seeing in the FMCG space as well. अगर हम consumer durables देखें, that is only one sector that is doing well in this market. If you look at stocks like Bajaj Consumer, Titan, some of these counters are doing well. Some new age companies, Eternal is doing well today. But apart from that, even there is some pressure in the pharma stocks as well here. So nevertheless, no support from any major key sectors. अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें, so I think the key resistance level to watch out in Bank Nifty would be 54,400, 54,500. But at this point of time, if I look at 54,400, similar story. Call writers are strengthening their positions, whereas the put writers are going down here. सो जैसे हमने निफ्टी और सेंसेक्स में भी देखा, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का भी जो रेजिस्टेंस है 54,400, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहा है. सो चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, तीनों इंडाइसेस लग रहा है कि तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड काफी कम चांस लग रहा है कि हम रेजिस्टेंस तोड़ के आप ऊपर जाएंगे. और नीचे की तरफ अगर मैं की लेवल की बात करूं बैंक निफ्टी के लिए, दैट वुड बी 53,900. सो इफ आई लुक एट 53,900 here, I think this will be an important support for Bank Nifty. And at Bank Nifty, 53,900 mein call writers are almost doing nothing here, whereas put writers have been trying to hold 53,900, 54,000 in Bank Nifty. So तीनों indices का support is very strong. So if I have to reiterate the levels again, Nifty 24,500 support, 24,700 resistance. Bank Nifty 80,000 support, 8,800 resistance. Sorry, Sensex. And Bank Nifty 53,900 support, whereas 54,400 is likely to act as a resistance for Bank Nifty here as well. तीनों indices का resistance काफी strong बनते हुए नजर आ रहा है. We'll have to wait and see. अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो तीनों इंडाइसेस में और एक सेलिंग आ सकती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द की सेक्टर्स एंड द स्टॉक्स टू वॉच टुडे, अगर आप सेक्टर्स की बात करें, सो नो मेजर सपोर्ट फ्रॉम एनी सेक्टर्स दैट वी आर सीइंग टुडे. But nevertheless, there are some pocket of stocks that are doing well, that are structurally जिनका प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है यहाँ पे. So if I have to talk about the first stock is Bajaj Consumer Care. तो अगर आप Bajaj Consumers देखें, so it was trading in a range. So around 220, 233 का एक रेंज में काफी टाइम से मूव हो रहा था. काफी टाइम से बेस बना के it had a strong up move. Post that it witnessed some correction, and then there is some kind of sideways movement that we saw. But again, we could see some kind of buying picking up today. 20 AM में से एक bounce आज हमें देखने को मिला है. RSI is inching towards the 60 mark. ADX is also moving about 25, and the price is also trading above its key moving averages. So if we get a strong close above 233, 235, chances are that we can see Bajaj Consumer moving towards 248, 250 levels in the short term. So this is one stock that you can keep in your radar. The other stock, if you remember, we had discussed this in Tuesday's session as well, which is Kolte Patil Developers.
सो कोल्टे पाटिल की हम बात करें, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद वी हैड सम करेक्शन, इट वाज हॉवरिंग अराउंड इट्स 100-day EMA एंड लास्ट 3 days इट ब्रोक आउट ऑफ दिस जोन एंड एक फॉलो अप मूव के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल गया यहाँ पे. And there is even the volumes have started to rise in Kolte Patil with RSI uh, at around 75 at this point. ADX is kind of flat. It's rising though, but last 3 days, despite the strong up move, ADX में एक flat line नजर आ रहा है. So if this current pullback continues, we can expect Kolte Patil to move towards 500 levels in the short term. So Kolte Patil is also one of the stock that you can keep in your radar. The other stock again which was doing well in the morning trade is UPL. तो अगर आप UPL देखोगे, ये जो resistance है, despite the strong selling pressure today, so it is down near about 0.8%. If you look at the open and high is the same. So 736.5, 736.5 आज का जो open और high है वो same है. बट अगर हम एक की रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, सो यूपीएल में दिस लेवल ऑफ 735, 740 is a strong resistance for UPL here. So ये जो 735, 740 है, यहाँ पे एक बार एक रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आया था, फिर एक 25 अगस्त को एक रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आया था यहाँ पे, एंड आज भी अगर हम देखेंगे तो अराउंड 736.5 से ही रेजिस्टेंस लिया है. So once we get a strong breakout above 735, 740, chances are that हमें UPL में एक out performance हमें नजर आ सकता है. So keep an eye on UPL as well. But there is some, again, looks like it is taking some resistance from 735 here, but we need a strong close above 735, 740. So this is the zone that you need to keep a track on. The next stock that I want to discuss is FEM Industries. तो अगर हम FEM Industries की बात करें, it's nicely moving in a higher high, higher low formation. RSI is above 60, ADX in a rising mode. Volumes have started to pick up here. So you can see volumes have been gradually growing since last 3 days. And 2 दिन पहले 20-day EMA से सपोर्ट लेके अब ऊपर की तरफ एक बाउंस बैक हमें मिला है. So we have the previous high around 2157, 2160. आज जो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, it had made a high of 2200, but we could see some profit bookings of the higher levels here. But if we get a strong close above 2167, 2200, then I feel FEM Industries can move up even higher. So this is also one stock that you can keep in your radar. One other stock is देवयानी इंटरनेशनल. सो अगर हम देवयानी इंटरनेशनल की बात करें, काफी टाइम से थोड़ा सा चॉपी मूवमेंट रहा है ये स्टॉक में. सो वी कुड सी जुलाई मंथ में काफी टाइम एक डाउन, एक साइडवेज जोन में था, फिर हमें एक ब्रेकडाउन मिला था यहाँ पे. But we could see some strong pullback coming in the counter. ADX has started to rise. RSI is and has started to go above 60. But I feel one key level to track in Devyani would be around this level of 178, 180. अगर ये pullback की इसके ऊपर close हमें मिलता है 180 के ऊपर, and if the pullback continues, then chances are that we can move towards 190, followed by 210 levels in the short term. Ideally from a short term perspective, I'm saying गणेश जी, यहाँ पे ideally ये 180, ये इसका एक major resistance है 178, 180. भले ये पुल बैक आया, अभी भी वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा एक रिवर्सल साइंस दिख रहा है, बट हमें और थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए. पहले तो हमें सबसे पहले 180 के ऊपर क्लोज चाहिए. अगर 180 के बाद क्लोज मिलने के बाद अगर पुल बैक मिलता है, वी कैन सी इट मूविंग टुवर्ड्स 190 फॉलोड बाय 210 लेवल्स ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन अदर स्टॉक इज श्रीराम पिस्टन्स. तो अगर हम श्रीराम पिस्टन्स की बात करें, ये भी मेजर रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है. ये 2610, 2620 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था. देन इट केप्ट हॉवरिंग अराउंड दिस रेजिस्टेंस ईयर. थोड़ा सा एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है, बट आई थिंक इट इज स्टिल होल्डिंग अबव इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ADX have started to rise. RSI is above 60. It is trading above its key moving averages. I think once we get close about 2620, 2650, अगर ये फिर से ये रेजिस्टेंस के ऊपर पार कर जाता है, then chances are that even Shriram Pistons can do well from a short-term basis. One other stock that I want to discuss is Paradip Phosphates. तो अगर हम Paradip की बात करें यहाँ पे,
So this is a major resistance level for the stock. So this level of 235 236 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है परादीप के लिए. तो अगर हमें 236 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो चांसेस आर दैट इवन परादीप कैन कंटिन्यू इट्स आउट परफॉर्मेंस. सो काफी टाइम से एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन से परादीप मूव हो रहा है यहाँ पे. It is also trading above its key moving averages. I think once we get a close about 235 236 chances are that we can see the stock moving up even higher. One other stock that I want to discuss is Hindware Home Automation. So Hindware Home Automation again, that is also, since the lows of 181, we had a strong move. Then we had a correction until its 100-day EMA, और वहां से फिर से एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में मूव हो रहा है. The ADX is kind of flat. RSI is slightly above 60, but it is trading above its key moving averages. I think once we get a close above 325, then chances are that the price can move higher from the current levels. Then if we look at one last stock for the day is Sudarshan Chemicals. तो अगर हम सुदर्शन केमिकल्स की बात करें यहाँ पे, सो ये काफी टाइम से एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है. 1390 on the downside, whereas 1500 on the upside. So it has been moving in this range here. So अगर हमें 1490 1500 के ऊपर एक अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है, then chances are that even Sudarshan Chemicals can start doing well on a short term basis. So these are some of the stocks that you can have in your radar. So that was all about today's mid-market session. Now let us start off with the Q&A. Ganesh ji, sir, can you change video to full HD? I think clear nahi hai kya, Ganesh ji? I think let me check. I think I'll have to check with the IT team. Video quality needs to be improved. I'll definitely check on that, Ganesh ji. Tarun ji, is there any chance of intraday Nifty? Nifty intraday फिलहाल तो अगर आप देखोगे पिछले आधे घंटे से कुछ भी नहीं हो रहा है निफ्टी में. I think if you want to take a chance in Nifty, maybe 24,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तरुण जी. Maybe 24,750 24,800 का कॉल आप सेल कर सकते हो, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स मे बी आप इंट्राडे बेसिस पे देख सकते हो, बिकॉज रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है. 24,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. तो आइडियली 24,750 या 24,800 का कॉल सेल इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट. मे बी 5-10 पॉइंट्स अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे मिलता है तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ट्रैक ऑन. बट अगर आप देखोगे देयर इज एब्सोल्युटली नो मोमेंटम राइट नाउ, एंड अपसाइड की भी कुछ चांस दिख नहीं रही है. एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो कुछ अपसाइड चांस नहीं लग रहा है. बट मे बी आई वुड से ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा डाइसी हो सकता है. इवन पुट बाय करोगे और ऐसा मूवमेंट आ जाएगा तो आज तो डीके आपका एकदम फास्ट होगा. सो इट्स बेटर टू अवॉइड ऑप्शन बाइंग. मे बी आप ऑप्शन सेलिंग थोड़ा फार अवे ओटीएम्स में आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, बट उसको मॉनिटर करना, बिकॉज एक्सपायरी है तो एक वाइल्ड मूव आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. सो कीप अ ट्रैक ऑन दैट. आई थिंक ओटीएम कॉल सेल वुड बी द राइट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मी फॉर द डे. मित्तल जी, पिडिलाइट. ओके, लेट मी लुक एट पिडिलाइट. पिडिलाइट अच्छा लग रहा था. इनफैक्ट वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था उसमें. लेट मी लुक एट पिडिलाइट इंडस्ट्रीज. या सो पिडिलाइट इज गुड. ये जो है ना काफी टाइम से जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, बट आई फील वंस इट इज बीन मूविंग इन दिस रेंज और काफी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट आया था. फिर ये जो 3130 3150 का जो जोन है, फिर से अभी वो ट्रेंड लाइन, इट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन योर. But I feel once we get a strong close above, let's say 3130 3150, I think it can even start moving higher with around 3240 being the first target and around 3400 being the next target here. So I feel wait above 3130 3150, ये जो कंजेशन एरिया है इसके ऊपर अगर हमें क्लोज मिलता है, I think then it can be positive. Sir, how can we see F&O segment as GDP growth unlikely to exceed 6.5% in the near term? Very difficult. I don't know. So a lot of things. I think first we'll have to see the impact of tariffs. So there have been news going around saying we might take 50 basis points to 100 basis point cut on the GDP. So 6.5 is what the RBI had predicted.
सो अगर ये यूएस टैरिफ इम्पैक्ट अभी आई थिंक वो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमें पता चलेगा कि जीडीपी का क्या ट्रेजेक्ट्री है. सो वी माइट maybe take a hit of 50 basis points in the GDP growth year. Secondly, the rumors floating around saying वीकली एक्सपायरी से अभी मंथली एक्सपायरीज में जाएंगे शायद. वी माइट हैव फोर्टनाइटली एक्सपायरीज, सो देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट पार्ट. सो शायद अभी वीकली एक्सपायरी से हम अगर लॉन्गर टर्म एक्सपायरीज में चले जाएंगे. मंथली एक्सपायरीज जैसे अगर आपको याद है 2013 जो 2015 में होता था ये, where we had monthly expiries. So we might अगर going by the rumors, it's not confirmed yet, but हो सकता है because weekly expiries में volumes काफी पिकअप हो गए थे, but monthly expiries में हो सकता है volumes might drop a bit. तो एफएनओ सेगमेंट में थोड़ा सा हमें इम्पैक्ट मिल सकता है. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट पहले तो मंथली एक्सपायरी तीनों में था, अभी फिर से अगर हम लॉन्गर टर्म एक्सपायरीज में जाते हैं with only अगर निफ्टी में अगर so even बैंक निफ्टी almost all the indices will have monthly expiries. I don't think ऐसा हो सकता है. Maybe we'll have 2 weeks expiry or fortnightly expiry, so we still await some clarity on that. But again, even if you look at the capital market stocks, थोड़े से pressure में है. If you look at CDSL, BSE, all these counters are slightly experiencing some kind of moderation at the current juncture here. So we'll have to wait and watch. Abhi tak, we can't comment on whether GDP growth can exceed 6.5%. Harish ji is asking for Hero MotoCorp. Hero MotoCorp is good. So at least a weak market mein auto sector is, one sector that has been doing well. So you have bought it at 4,009. I think you can continue to hold. You can trail your stop loss to your cost itself, 4,900. I feel it can move towards 5,600 यहाँ पे. Okay, I guess it should be fine now. Do let me know if I'm audible. Okay. Rajan ji is asking for गणेश जी. आप मेरे को ये तीसरी बार पूछ लिए ओला इलेक्ट्रिक. पिछले आई थिंक लास्ट वीक भी आपने पूछा था ये ओला इलेक्ट्रिक का. सो ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, सो स्टिल वेरी अर्ली साइड्स ओला इलेक्ट्रिक में. देखो ये फर्स्ट पुल बैक आया है यहाँ पे, बट एक अपटिक के बाद थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद आई थिंक इट हैज स्टार्टेड टू मूव अप अगेन. बट सी फंडामेंटली देखा जाए सो नथिंग मच हैज इम्प्रूव्ड इन ओला इलेक्ट्रिक हियर. But I think it will be too early to jump into the stock is what I feel. I think it's still better to avoid Ola Electric. See, technically अगर आप देखा जाए, अगर आपको short term में if you are I think my advice would be to be away from this stock. But still अगर आपको technically अगर एक levels चाहिए तो I think if you want to enter at the current levels, considering the fact that एक uptick के बाद थोड़ा सा correction के बाद again हम फिर से high के ऊपर चले गए, maybe 46 का SL रख के for an upside of 55-60. I think 60 का upside with an SL of 45 आप hold कर सकते हो, considering the fact that ये pullback sustain करेगा. But फिलहाल के लिए अगर आप genuinely अगर आप मेरा राय अगर सुनना चाहोगे तो I would say still it's better to avoid Ola Electric. Nifty weekly time frame. अरे मैं भी क्या यहाँ पे weekly टाइप कर रहा हूँ. So Nifty I look at weekly.
So if I look at, see, I think one positive development on Nifty's weekly was on 11th of August, after 6 weeks of consecutive declines, we had a positive close here. Then हम चाह रहे थे कि ये जो 24,700 है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे, बट वो क्लोजिंग अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। अब हम फिर से हम 20 वीक ईएमए के आसपास आ गए, विच इज अराउंड 24,500. सो आई फील दिस 24,500 इज अ क्रूशियल सपोर्ट फॉर निफ्टी, बिकॉज अगर ये 24,500 टूटता है, देन वी कैन इवन गो टुवर्ड्स 24,350, 24,300 ऑन द डाउन साइड, which is this level. So I hope Nifty is able to sustain about 24,500, because अगर वो नहीं होता है, then थोड़ा सा और प्रेशर आ सकता है. But one interesting observation on Bank Nifty's daily chart is यहाँ पे एक एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे. सो यू कैन सी दिस इज योर शोल्डर, दिस इज योर बिग हेड, एंड दिस इज योर शोल्डर अगेन, एंड ये आपका नेकलाइन है यहाँ पे. जो यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिला था ट्यूसडे को, दैट वाज योर हेड एंड शोल्डर नेकलाइन ब्रेकडाउन. So Bank Nifty is looking more negative as compared to Nifty and Sensex here. ITBs is good. So see, IT currently एक अच्छे support में भी है. So if you are still confident on IT, because जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक, अगेन निफ्टी आईटी बाय निफ्टी की रेशियो चार्ट देखे तो हर टाइम ये जब भी 1.4 आता है रेशियो चार्ट में, वी कुड सी आईटी आउट परफॉर्मिंग. अभी फिर से हमने 1.4 से ही एक बाउंस बैक आते हुए देखा है यहाँ पे. सो आई थिंक आप चांस ले सकते हो अगर आप आईटी बीज, अगर आप ग्रेजुअल एसआईपी देख रहे हो. सो आई थिंक द इमीडिएट सपोर्ट फॉर आईटी बीज इज अराउंड 36.5 to 36. I think upside it can go towards 43, 44 on a short term basis. NHPC buy level, Mantosh ji is asking for NHPC. अभी के लिए avoid NHPC, Mantosh ji, because chart structure is looking weak. I think it is also below its key moving averages. RSI भी 40 के नीचे, ADX थोड़ा सा flat है. I feel इसका next support for NHPC is around 76. So chances are that if the fall continues, the fall can extend towards 76 here. So I think there are no signs of buying here. I think we'll have to wait. थोड़ा फिर से revisit करना पड़ेगा बाद में. अभी के लिए 76 is a strong support for NHPC. So avoid buying NHPC at the current levels, Mantosh. थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा हमें. बट अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो 76 पे एसएल रख के आप होल्ड कर सकते हो. आइडियली वो 76 तक आके हमें कुछ रिवर्सल साइंस दिखना चाहिए. अभी फिलहाल के लिए कुछ रिवर्सल साइंस नहीं है यहाँ पे. ठीक है. So that's all, guys. Any other questions, do let me know in the chat box, and I'll be happy to answer your questions. So if you look at Nifty again, some pressure has started to come here. So that is why I was Tarun ji, मैं आपको बोल रहा था towards OTM call is something that you need to look at, because the resistance is getting stronger. So even आप 24,700 देखोगे at this current juncture. So I look at 24,700 here, 24,700. So the resistance is getting stronger. Sun Pharma, Mantosh जी अवॉइड. सन फार्मा एकदम से वीक है. आई थिंक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1550 में है. जब तक आपको रिवर्सल साइंस नहीं मिलता है, इट्स बेटर टू अवॉइड. Absolutely. Bank Nifty has been the drag. I think today it's Bank Nifty and your IT stocks. These are the ones that are dragging. I think especially IT में sell off आ रहा है, and even FMCG which was positive in the morning, वो भी अभी टूटने स्टार्ट हुआ है. एंड प्राइवेट बैंक का तो आउट परफॉर्मेंस काफी टाइम से ही चल रहा है. सो आई थिंक सन फार्मा अवॉइड, संतोष जी. मनाली पेट्रोकेमिकल, थोड़ा कंजेशन है यहाँ पे. आई थिंक बिलो 62 इज वेयर द सपोर्ट इज. आई थिंक चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है. आई थिंक 62 के नीचे और नीचे करेक्ट हो सकता है अंटिल 56. आई थिंक अवॉइड एनी फ्रेश बाय इन मनाली पेट्रोकेमिकल्स एज वेल. प्रोटीन ई गवर्नेंस, वेरी अर्ली. आई थिंक स्टिल वी नीड टू वेट. थोड़ा 915, 920 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलने दो, चंपा जी. आई थिंक जब तक वो नहीं आता है, स्टिल
थोड़ा और रिस्क को टाइम देना पड़ेगा रिविजिट करने. स्टिल अर्ली टू से यहाँ से एक रिवर्सल है क्या, बट थोड़ा और हमें एक स्ट्रॉन्ग साइंस चाहिए. मोर लाइक आपका ओला इलेक्ट्रिक जैसे ही इसका प्राइस चार्ट लग रहा है. डाउन ट्रेंड के बाद एक फर्स्ट टिक आया, थोड़ा पुल बैक आया, अगेन इट इज गोइंग अप, बट एक 915 920 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए प्रोटीन में. मोरपेन लैब्स, मोरपेन लैब्स अवॉइड मुकेश जी. आई थिंक मोरपेन लैब्स का एक मेजर सपोर्ट अगर आप देखोगे ना 42 के आसपास है. तो अगर 42 तक करेक्ट होता है, वील वेट अंटिल 42, और 42 के बाद वील सर्च फॉर सम काइंड ऑफ रिवर्सल्स, बट अवॉइड एवरेजिंग एट द करंट लेवल. रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज से सपोर्ट नहीं मिल रहा है प्रशांत जी हमें. देखो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से वो एक अच्छा 200 डे ये में से एक अच्छा मोमेंटम आया था यहाँ पे. 19 अगस्त को ऐसे लग रहा था कि अब रिलायंस में ऊपर जाएगा और थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है हमारे ओवरऑल मार्केट्स में भी. बट अगेन इट हैज कम बैक टू इट्स 50 डे ईएमए. सो आई थिंक दिस लेवल ऑफ 1360 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये 1360 के नीचे जाता है तो और स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है. सो 1360 इज द लेवल टू वॉच आउट इन रिलायंस. पार्क होटल, which is what is the symbol for Park Hotel? Acha, Park Hotels, okay. Park Hotels bought at 155. I think you can hold with an SL of 135. अभी फिलहाल के लिए तो साइडवेज है. आई थिंक इसका मोमेंटम मे बी ये 165 170 के ऊपर इसका मोमेंटम आ सकता है. राइट नाउ इट्स फ्लैट. आई थिंक यू कैन होल्ड विद एन SL ऑफ 135. अच्छा, आपका ई मार्जिन में है तो आई थिंक यू हैव अ थोड़ा स्लाइट, थोड़ा आई थिंक 145 कर देना. डोंट कीप एट 135 बिकॉज चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है. तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस के जगह में वील हैव अ टाइट स्टॉप लॉस. आई थिंक अराउंड 145 का एसएल से आप होल्ड कर सकते हो. भारत फोर्ज, भारत फोर्ज में भी थोड़ा सा प्रेशर है. आई थिंक द 1100 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर भारत फोर्ज. तो अगर भारत फॉर्ज ये 1100 के नीचे जाता है तो चांसेस आर दैट और करेक्ट हो सकता है यहाँ पे. बट बिलो 1100 इट कैन इवन करेक्ट फर्दर. सुकांतो जी, फॉर भारत फॉर्ज. ABB is also very negative. I think the next immediate support for, I think this level was very important, the level of 5000. I think इसका जो next immediate support है that is around 4700. So I think maybe और 300 points का downside possible है. Upside where there is no signs of reversal in this stock. So I think it's better to avoid ABB as well. Can I buy call? अरे तरुण जी, क्यों आपको ये टाइम पे कॉल क्यों बाय करना है? बिकॉज सी ओवरऑल एकदम वीक है तरुण जी यहाँ पे. लाइक आई सेड, रेजिस्टेंस इज काइंड ऑफ गेटिंग स्ट्रॉन्गर. कॉल आप लोगे तो अगर आपको फंसना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो कॉल, बट इट्स नॉट वर्थ इट. आई थिंक कॉल को लेना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट. आई थिंक 24700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. सो doesn't look like it's a call buying market, Tarun ji. Enrin, see if I look at the daily chart for Enrin, so Enrin is good. I think आप 3230 का SL को ट्रेल करके आप इसको होल्ड कर सकते हो. आई थिंक वी नीड अ मूव अबाउ दिस लेवल. ये जो दो बार ये 3415 3420 के आसपास ये रेजिस्टेंस लिया हुआ है. आई थिंक 3415 3420 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है, देन चांसेस आर दैट वी कैन सी सम अपसाइड इन दिस स्टॉक. So for now you can hold with an SL of 3000 to 3220. और ये जो 20 डे ये में वहाँ पे आप एक SL रख के आप इसको और अपसाइड के लिए आप होल्ड कर सकते हो. ठीक है, all good guys. So I hope this mid market session was informative. And so that's all from today's mid market session. I'll see you tomorrow at 12:30. So tomorrow we'll be doing an extensive analysis of the rollover report. आज monthly expiry है, तो आज हमें एक अगस्त सीरीज का rollover report मिलेगा. So rollover report will be hosted on SBI Securities website tomorrow morning at around 8:30 to 9 के बीच आपको rollover report मिल जाएगा.
And tomorrow's mid market session we'll be discussing about rollovers totally कि August series क्या रहा है, क्या लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अनवाइंड कर रहे हैं, वो हमें आज के डेटा के बेसिस पे पता चलेगा. So do ensure you attend tomorrow's session as well. So that's all from my end. Take care, guys. Stay safe, and I'll see you tomorrow at 12:30 on SBI Securities YouTube channel. Bye, guys. Take care and stay safe.